Dear student, today we will start operation on fractions, that is addition, subtraction, multiplication and division. These operations we will start on fraction. उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में दो तरह के एडिशन हो सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर, और जब उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं मतलब विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर. मतलब फ्रैक्शन को तब जोड़ना जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो. तो कैसे हम जोड़ेंगे? लेट अस सी. Addition of fraction with same denominator. I'm taking an example here. We have 3 by 5 plus 4 by 5. Here you can see 5 is here in the denominator of this and 5 is here in the denominator of this as well. You can take the LCM as 5. So 5 1 5 will be here. Here you may copy down 3 plus 4 and it will become 3 plus 4, which will be 7. 7 by 5. Since it is an improper fraction, we can convert it into a mixed fraction by dividing by 5. 5 1 ja 5, 7 minus 5 2. So you got here 1 whole 2 upon 5, which is the required answer. So addition of fraction में हमने बात किया पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर. उसमें हमने दो फ्रैक्शन लिए, एक 3 by 5 दूसरा 4 by 5 एंड 3 plus 4 वी हैड डन हियर. हमें नोमिनेटर जब चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जुड़ जाएगा. 3 plus 4 विच विल कम 7. 7 by 5 और आफ्टर कन्वर्टेड इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन वी गॉट 1 whole 2 by 7. We can take one more example of this. Suppose we have a mixed fraction 3 whole 2 upon 7 plus 1 whole 1 upon 7. This is a mixed fraction. We have to firstly convert it into improper. 7 3 ja 21, 22, 23. 23 upon 7. 7 1 ja 7 and 1 8 upon 7. 7 will be the LCM of this. You get here 23 plus 8. 8 plus 3, 11 की 1 carry 1, 2 and 1 3, 31 upon 7. Now we have to divide 31 by 7. 7 4 ja 28, 3. So it will become 4 whole 3 upon 7. तो हमने जो बात किया यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने बात किया कि दो तरह के एडिशन हमें सीखने हैं, जब उनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और जब उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे. तो जब उनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे उस एडिशन में हमने दो तरह के एग्जांपल हो सकते हैं, उसका हमने एग्जांपल कंसीडर किया. अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो लेट अस सी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन with different डिनोमिनेटर. हम फ्रैक्शन को ऐड करना तब सीखेंगे जब उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे. कैसे हम ऐड कर सकते हैं? सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन 3 by 5 and the fraction 2 by 10. You can see here you have two fractions here, 3 by 5 and 2 by 5 10 respectively, and the denominator of both are different, one having 5, one other having 10. So what we have to do, we have to take the LCM of 5 and 10. What it will become? 5 comma 10. 2 say 2 5 ja 5 say 1 ja 1 ja. So LCM will be 2 multiplied by 5, which will become 10. So you got 10 here. Now we have to do, in the table of 5 where this 10 comes, it comes on 2. 5 2 ja 10. So this 3 will be multiplied by 2. And in the table of 10 where this 10 comes,
2 1 ja 10, 1 ja 10. So it will become, so 3 2 ja 6 plus 2 1 ja 2 upon 10, 8 upon 10. We can simplify it. 2 4 ja 8, 2 5 ja 10. So you got here 4 by 5, which is the required answer. In terms of addition of fraction with different denominator, we may have one more example. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 होल 1 अपान 2 और इसमें हमने ऐड करना है 2 प्लस 2 होल 1 अपान 3. तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 2 3 जा 8, 2 3 जा 6, 6 and 1 7, 7 upon 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 and 1 7, 7 upon 3. ऐड कर लेते हैं इसको. 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं. एलसीएम ऑफ 2 कामा 3. 2 कामा 3 विल बी हियर 1 जा 3, 1 ja 1 ja, 2 multiplied by 3 6, so it will be 6. In the table of 2 where 6 comes, 6 comes on 3, so 7 3 ja. In table of 3 where 6 comes, 2 7 2 ja, 7 3 ja 21 plus 7 2 ja 14 upon 6, 5 3 35 upon 6. This 35 has to be divided by 6. 6 5 is 30 and we got here 5. So this will be 5 whole 5 upon 6. 5 whole 5 upon 6. तो ये था addition of fraction in two terms. So summary of the chapter, summary of the topic of today. Today we learn about addition of fraction, and in this addition of fraction we discussed two topics with same denominator we have to add, and with different denominator. So two kind of addition we did here, when denominators are same and when denominators are different. Now I am giving you assignment. To do as practice. Assignment is add the following. And in add the following, what we have to add? 2 by 5 plus 3 by 4 plus 7 by 2. B. 1 whole 1 upon 3 plus 2 whole 1 upon 5. 1 whole 1 upon 6. C. 2 whole 1 upon 4. 3 whole 1 upon 5. 1 whole 1 upon 4. D. 1 whole 1 upon 5. 2 whole 1 upon 3, 1 whole 1 upon 4. Two more examples we can take of similar denominators. 2 by 5 plus 3 by 5 plus 1 whole 1 by 5. F. 1 whole 1 upon 6 plus 2 whole 1 upon 6 plus 3 whole 1 upon 6. So this much we have to do. You can do the practice of these all, and the discussion about the topic we have discussed thoroughly. Thank you.